Assalamu alaikum. It's day 11th on 13th summer school at LHC Physics. Unfortunately, it's last day of the workshop today, and today's again it's raining. I just came, so today's similar lectures, but unfortunately Jonas leave today, and we have lectures by Bilal Masood, Faisal Akram, and they are local professors, and by foreigners like we have Waller. They will discuss on machine learning, and similarly we have a lecture by Christian Allen Hens from United States of America. He will discuss about the CMS trackers. So this is NCP, technical block, cafeteria, and these are the MOQ and BOQ, girls and boys hostel. Today, I think last time we did an overview over all machine learning techniques. This time, I thought I would go into detail on one technique especially. And I thought I'd choose a technique that is ubiquitous in machine learning and indeed in data science. And also in an effort to convince you that unsupervised learning is something really nice, I'm going to explain it to you. And that technique is called the singular value decomposition. And so what we are going to do is I'm trying to explain to you why this decomposition is important, and then we're going to see some applications of that. So to set the stage, why is that decomposition important? It's important because it relates to error analysis. So we can make this bias variance trade-off I mentioned last lecture, we can make that rigorous by using the singular value decomposition, at least for simple models. It is also important because it connects to what is called low-rank approximations or dimensional low-rank approximations, and this is something we're going to discuss today. And the other thing we're going to discuss today is it relates to what is called dimensionality reduction. So this is something we're going to discuss today. Great. Now to set the stage, let us think back to what we had. We had a bunch of data, and the data we arranged in a matrix. And that matrix we call the design matrix. So that matrix was some matrix that had was n times k. It had n observations, and it had k observables, or what we call features.
And so the elements are something like x11 to xk1, and then x1n, and then xkn. So that was the idea, right? And now what we try to understand is, we want to understand the structure of that object. And usually when we are in physics, what we want to do, for instance, if you think of quantum mechanics, if we have a matrix and we want to understand its structure, one thing, oh, by the way, I will upload this, afterwards, so yeah, if you cannot read stuff, please ask me, but I can also then make a copy and will then upload the PDF for this. Please, by the way, interrupt if you have questions. Anyway, whenever we have a matrix in physics, think of a Hamiltonian, what we do is a decomposition. So something we might want to try is, for instance, an eigendecomposition. But there is a problem. Anybody have any idea what the problem might be? Using an eigendecomposition here. So, it's not square, not necessarily. Usually the number of observations is much bigger than the number of features. So the matrix is not square. So we cannot use that, right? So what we're going to do? Well, we could, for example, construct the matrix X transpose X. Right? Suppose we construct that matrix, X transpose X. What happens? What is that matrix? Well, X transpose X is obviously square, but it's even more than that. It's symmetric. If X is real, what we assume now, but then if you transpose it, you have to swap the order and transpose, so it gives the same thing. And it is positive semi-definite. Simply because it's the square of another matrix in a sense, so it's very easy to show that if you put a vector here, then that inner product. Here currently I am wandering and going towards the auditorium, and recently lecture in just 10 minutes, and the lecture is about dark matter and supersymmetry by John Ellis. Very interesting. John Ellis is one of the theoretical physicists nowadays. So I'm just going, looking where's the auditorium basically. Okay. So here is NCP. This is basically the technical block. And here is the auditorium. Today is the last day of workshop 13 summer school on LHC Physics. This is the MOQ, hostel for boys, and similarly there is a BOQ, hostel for girls, and this is cafeteria where just I am coming after taking tea, and this is technical block. NCP is working on silicon detectors which are used for CMS on LHC. So by NCP the silicon detectors are made in this technical block, and here is the auditorium where I am just going for my lecture, and lecture is on dark matter by John Ellis.
many parton cross section. Every parton has a fraction x, and the weightage of every x is what is called structure function. And here I show, here if I could be, I is a type of quark. It can be up, it can be down, you see actually. It can be up, it is a pronoun. It can be up, it can be down, but it can be d bar. It can be d bar as well. The proton is not composed of only UUV. They are called valence quarks, but there are other structure, other things in proton as well. I have below I have more to say about that. So proton is not only UUV. You can say there are others as well. That's one thing which I forgot mentioning yesterday. Now coming back to what I summarized yesterday was, that is your supposition is that electron had scattering as an elementary particle. Then I yesterday full lecture was spent on that, almost full lecture. Then that in that case the structure functions, or if they will be function of only x, no other variable. Now experimental evidence says that the dependence of only x is here. It depends on x, but it's a flat. It doesn't depend on any other variable. It's here, but that's called Gaussian scaling. But here Gaussian scaling is violated. That means it's not a function of x only. I think now detailed can be skipped. What I'm trying to say is details are here. But I think I better skip don't spend our time on details. What I mean to say is, we assumed that the result was flat, and that is wrong. Somewhere is violated. That means the actual discipline is not that, it's something else. What is something else? I don't have time to tell you my justification of that. I just tell you the claim, and in many places you can see that. The claim is, if that is violated, the actual is this. And the reason I am calling Compton scattering is, had it been actual Compton scattering, there would be photon here and photon here. But here is not photon, it's a gluon. So that is where I introduced the word of saying particle called gluon. Okay, that's also technical detail which justifies what I have studied, but I don't have time to spend time on that. So I better, that's also, it's nothing new. Except that I pointed out that if it is that, then will be coupling constant alpha. Here, that's a QED, that's alpha, but now it's not QED, it's quantum chromodynamics. Here the coupling constant is charge square, proportional to that is alpha f. That's the meaning, and that's what is the gluon. So that is the today's matter. So far what I said is that, no, the question is what is QCD? QCD is, one lesson could be the QCD has many QEDs. Electric charge is one, and a color charge there can be 3 color charge. Okay. So that means you can say that a QCD is 3 times the QED. But actually, it's not that simple. QCD is much different to QED. The reason, let's see when it comes. The reason is that quarks carry color, and a color can be 3 kinds: red, blue, green, or any other green combination you take, or anti-red, anti-blue, anti-green. If in between any particle is exchanged, and for the moment you don't know what particle is, here it's red and here it's red off, that's red. If this is red, this is anti-blue, then they don't cancel. So the color charge in gluon is non-zero. In comparison, the electric charge in photon is 0. That is the major difference between photon and gluon. And that makes QCD much more different to QED. It's not only 3 times QED, it's much different. And I've written it now.
Okay, that's repetition. Okay, now here come to that. Because gluons have also color charge, so there can be interaction between two gluons, three gluons. That's you don't, in QED you don't have photon, that vortex is missing. In QCD is there. And that makes a major difference in quantum electrodynamics and quantum chromo. Chromo means actually a color charge here. And that's why, and because of that, I think 5 minutes ago I showed you that in proton we have up-down strain and anti-up, anti-down strain, charm, and so on. That is there. Up, charm, you say strain or charm. You think the proton is up, down, that's only up and down. Others are not here in the form of this glue, but this glue, they can be, you can say they can be strain, anti-strain, they can be charm, anti-charm, and so that's why you can say that photon can have other quarks as well. Okay, that's QCD, quantum chromodynamics. And that can be approximated by quark model. In quark model, we have only UUV. Quark is a model, that's not like a quantum mechanics is related to the hydrogen atom. It's a Bohr model. You can use it, the engineers perhaps still use it, but that would be a model. So that's why quark is only a model, and QCD is actually that's QCD and that's a quark model. It's an approximation, good or ये gluon के जरिए, ठीक है? तो इस टॉपिक ये gluon और string में क्या फर्क है? ये फिर आप सिर्फ टॉपिक रखें और इसके जवाब के लिए भी चीजें मालूम है, ठीक है? अब ये मैंने कुछ लिखा है, ठीक है? ये टॉपिक रखने थे, इसके जवाब के लिए जानते हैं, ठीक है? ये पिछली पिक्चर में एक दफा आपके लिए गया भी होंगे। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ब्रेक है, और दूसरी तरफ है ग्लूऑन ब्रेक, ग्लूऑन के क्वांटिटी का प्रोडक्शन के। इन दोनों चीजों में आपने क्या सब क्या जस्ट ये फिर आप सिर्फ क्वेश्चन है, इसके जवाब के लिए इंतजार करें। इट शुड बी मेबी 5 or 10 minutes। ओके, नाउ अभी बात तो नहीं चल रही है ग्लूऑन की कर रहा हूँ। ग्लूऑन के फर्दर यूजेज में एक ही है कि वो था ना कि जब प्रोटॉन के दरमियान न्यूट्रॉन एक्सचेंज होता है, पायोन एक्सचेंज होता है, तो असल में QCD के मुताबिक, तो झुकावा मॉडल था ना, QCD के मुताबिक ये कितना कुछ है। इसमें देखिए यहाँ ये ग्लूऑन प्रोपेगेटर है और ये ग्लूऑन प्रोपेगेटर 2 4 ये ग्लूऑन प्रोपेगेटर और ये सब ये हिग्स का जिक्र सिर्फ क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स से रिलेटेड फॉर्मेट डायग्राम में नहीं है, क्वांटम से बाहर हिग्स के लिए भी है। इसमें कहाँ है ग्लूऑन? स्प्रिंग और ब्लॉक का मतलब है कि जो प्रोटॉन है असल में तो प्रोटॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें 3 क्वार्क वगैरह, इसमें किसी एक क्वार्क से पूरा यहाँ लो है, किसी एक क्वार्क से ग्लूऑन कवर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, QCD फॉर्मेट डायग्राम। ओके, QCD अच्छा ये है थिंक ऑफ टाइम की कमी की वजह से मैं बेहतर सामना लगाऊं। मैंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लैग्रांजियन को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स का लैग्रांजियन। चलिए थोड़ा सा टाइम से मेरे पास है, ये क्या है बेसिकली जो फर्क पड़ता है वो ये है कि यहाँ जो था ना इसके साथ ये मिसाल के तौर पर ये देखें कोवेलेंट डेरिवेटिव में दिखाया था, वो QED में क्या था डेल्टा U माइनस AU, यहाँ एक्स्ट्रा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही और ये 3 क्रॉस मैट्रिक्स होगी। तो ये बेसिकली और ज्यादा बड़ा फर्क जो है ना वो ये F यूनियन है, मुझे क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर। यहाँ जो QCD है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा, क्रोमोमैग्नेटिक टेंसर होगा ना, क्रोमो टेंसर। उसमें QED में 2 टर्म थे, यहाँ 3 टर्म है। मेरे पास पूरी स्लाइड है इसकी रीजन दिखाने के लिए कि 3 टर्म क्यों है, बट आई थिंक मेरे पास टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको सिर्फ दिखाऊंगा। रिजल्ट यही है अगर इसमें ग्राफ यूनियन में A भी है स्क्वायर भी है, ग्राफ यूनियन मल्टीप्लाई बाय ग्राफ करेंगे तो A प्लस A स्क्वायर में क्या होगा, A स्क्वायर भी होगा, A क्यूब भी होगा और A बार 4 भी होगा। A क्यूब होगा तो ये डायग्राम होगी और A 4 होगा तो ये। ओके, ये अच्छा ये फाइनल ये तो कल ऑब्वियस है। ये जो वर्टेक्स है ना ये तो QED में भी और QCD में भी।
ओके अच्छा नाउ अगेन वो था क्यूडी का जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने जो सेकंड लेक्चर का जो स्टार्ट था वो इज इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल है कि नहीं है ठीक है नाउ इतना पता चला नाउ वी टॉकिंग अबाउट कलर चार्ज ठीक है अगेन में सवाल है कि कलर चार्ज वेरिएबल है कि नहीं है अच्छा जो चार्ज की जो वेरिएबिलिटी थी वो मैंने उसमें बताया था कि मैं असल में क्यूसीडी की खातिर कर रहा था क्यूडी में एक्चुअली जो चार्ज जो वेरी करता है ना वो तो बहुत एक 5% की वेरिएशन होती है समझे लेस देन 4% वो तो देखा था अपने तो मुझे उसको टाइम भी लगाना चाहिए था वो टॉपिक मैंने इस वजह से वहां इंट्रोड्यूस किया कि जहां जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कलर चार्ज की वेरिएशन ये बड़ी सिग्निफिकेंट है The best of my knowledge जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ अब अच्छा अब ये मेरा फील्ड है शुरू होने से पहले एजुकेशन सेक्टर उसमें 0.44 यानी क्यूडी में क्या था चार्ज है ना वो डायमेंशन लेस है 1 और 137 ये मुझे बताने का टाइम नहीं मिला लेकिन 1 और 137 का मतलब है ये 1 के मुकाबले में ये खासा कम है ये जो यूनिट लेस नंबर होते हैं उनको 1 से कंपेयर करते हैं ठीक है वो 1% से भी कम है आप इसे और 1 और 137 के 1 और 130 हो गया आपके दोनों सूत्र 1% से कम है क्योंकि हायर ऑर्डर नेगलेक्ट की जा सकती है लेकिन यहाँ क्या है ये अभी मेरे दिन में एक मॉडल में जो फिट है 0.54 अब 0.54 का स्कोर तो मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता एंड सो ऑन ये 1 भी 3 भी है और समटाइम 0.44 भी है एनीवे द टॉपिक इज ये वेरिएबल क्यों है ये पहली बात है कि वेरिएबल है ये जो है ना QED में इसका वेरिएबल होना ये तो मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूं कल के स्टार्ट में ये एक नई चीज है कि QCD में भी ये वेरिएबल है अच्छा वजह कुछ याद है आपको क्या है QED में क्या हुआ है बात ये थी कि पेयर प्रोड्यूस हुए की वजह से अब जो पेयर है ना वो फाइनल डायग्राम में क्या होता है पेयर का मतलब था कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और फोटॉन उसकी वजह से ये डिपेंडेंसी है अब यहाँ क्या है QCD में क्या है इस तरह की चीज तो QED में भी थी ना वहाँ फोटॉन था इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन था यहाँ ग्लूऑन है पॉजिट्रॉन ये तो QED में भी और QCD में अगर यही बात होती ट्रेंड एक जैसा होना था पर QCD में जो नई बात है ना वो ये है और जहां ये है अगर इसको आप ये कहें अगर यहाँ कल के लेक्चर के शुरू में ये था कि स्क्रीनिंग ये थी कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव उसके ज्यादा करीब है उसको कैंसिल करेगा ज्यादा कैंसिल करेगा जहां अगर ये रेड है तो इसके करीब कौन है वो भी रेड है तो किसके साथ मैच है तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव कैंसिल करेगा तो यहाँ रेड के करीब रेड ही होगा उसको कैंसिल नहीं करेगा एनहांस करेगा चलें आपका जैसा है नहीं वो नहीं उठा रहा हूँ ना वही से सोच रहा हूँ मैंने कोई ये नहीं टाइम नहीं आज रात का टाइम में क्या कर रहे हैं
तेज भी नहीं पड़ना चाहिए हमारे पास ऑप्शन नहीं ना उसकी जगह पे उसके अलावा वो तो था ही नहीं ना, उसके अलावा बहुत सारे बाकी सारे मटीरियल्स के थे। मटीरियल्स और कंप्यूटेशन यार सिमुलेशन का एक सब्जेक्ट सिमुलेशन का आ रहा है, वो नहीं, वो सिमुलेशन का कोई भी नहीं है यार वो क्या किस तरह होगा बस एक दफ़ा जाके देखा नहीं, वो तो जाए क्लास आप सबके लिए। नहीं वही इस पर एक दफ़ा थोड़ा बता के किस तरह होगा क्योंकि हम सिमुलेशन ही करते हैं ना तो देखने वो किस तरह सिमुलेशन करवा वो सिमुलेशन नहीं कराते, वो आपको बच्चों ने बताया ही होगा कि स्लाइड नहीं मैंने उससे नहीं पढ़ा है Umar Farooq